मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ फ्रॉम द टाइम व्हेन आई वाज 15 ईयर्स ओल्ड एंड कुछ महीने पहले मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सोलो ट्रिप करी थी विच वाज अराउंड 2 मंथ्स। आई वेंट टू द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया विच आई हैव नेवर बिन बिफोर। तो इस वीडियो में मैं अपने लेसन शेयर करने वाला हूँ एंड मैं आप लोग को बताऊँगा कि वाई यू शुड ऑल्सो सोलो ट्रैवल एंड हाउ इट वुड चेंज योर लाइफ। सो स्टार्ट करते हैं। The first thing that I learned from this solo trip was कि social skills are a muscle. You're not social because you don't practice enough. With enough practice, everyone can be social, okay? Now ये अलग बात है कि आप एक इंट्रोवर्ट हो या फिर एक्सट्रोवर्ट हो, लाइक अलग अलग टाइप के लोगों को अलग अलग मात्रा में सोशल इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है। इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट यू वुड प्रेफर टू बी अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम। सो या दैट्स द थिंग एंड दैट्स द फर्स्ट लेसन आई लर्नड। सो अगर आपको लगता है कि आप सोशल नहीं हो तो जस्ट go on a solo travel. You wouldn't have any choice but to talk to people. Okay, that's the first thing I learned. The second thing I learned was traveling isn't that much fun in itself. After a while it gets boring. You only enjoy travel because there's a scarcity of it in your life. If that becomes your life it would kind of get really boring really fast because टू बी ऑनेस्ट आफ्टर मंथ वन लाइक मेरी बॉडी एकदम अडाप्ट हो गई थी उस लाइफस्टाइल में एंड मेरे को आदत पड़ गई थी ट्रैवल की बेसिकली दैट वाज द थिंग। द नेक्स्ट लेसन इज अबाउट नाइट लाइफ गर्ल्स अल्कोहल एंड ड्रग्स एंड पार्टी ऑल ऑफ दैट शिट। ओके, एंड इन चीज़ों के साथ भी यही है कि दे गेट टू बोरिंग टू फास्ट। you crave them because you have a scarcity of them in your life. So that's the thing. The fourth lesson जो मैंने सीखा it was actually from a Polish man, like एक बंदा था पोलैंड से and he became a really good friend of mine in this travel. And I realized that the way people in the West live their life is so different to ours. These people are so stress free. These people really know how to enjoy life. And the reason they are able to do it is because they really practice living in the now. हमारे जो लोग होते हैं बेसिकली इंडिया वाले, हम बेसिकली घर में होते हैं तो ऑफिस का सोच रहे होते हैं, काम का सोच रहे होते हैं, काम करते हैं तो किसी और चीज़ का सोच रहे होते हैं। दीज पीपल हैव फाउंड आउट अ वे टू क्रिएट अ बैलेंस। when they are traveling they are traveling, when they are working they are working. So yeah, that's the thing. That's the lesson I've learned. The next thing I want to talk about is suppressing desire. बहुत टाइम तक मैं अपना डिज़ायर सप्रेस कर रहा था टू ट्रैवल बिकॉज आई बिलीव्ड कि अगर मैं ट्रैवल करूँगा तो आई माइट गेट डिस्ट्रैक्टेड, आई माइट वांट टू ट्रैवल मोर इन द फ्यूचर। बट जो चीज़ मेरे साथ हुई इट वाज एक्चुअली द ऑपोजिट। I no longer want to travel. I can go to like a lot of different countries now. I have a decent amount of money with me right now, but I don't want to do it. I want to focus on my thing that I'm doing right now. So yeah, that's the thing. If you have some desire in yourself, something that you think is a vice or something, just do it. The next thing is that reality is often very different from what we think it is. If I talk about alcohol, I have always believed that alcohol makes people violent, that we should stop drinking, we should stop sale of alcohol and all of that shit. But what I found out was कि मैं सिक्किम में गया था and Sikkim has the most liberal laws on alcohol. You can sell it basically without license if it's homemade. And what I've seen is that Sikkim probably has the most polite people in India. So yeah, that was really interesting to me. And the second thing I noticed was कि I wasn't really aware कि like like क्या बोलते हैं इंटरनेट कनेक्शन कितना पुअर है हमारे कंट्री में। व्हेन आई वाज इन मेघालय एंड सिक्किम बोथ, जब भी आप ट्रैवल करते हो इन दोनों प्लेसेस में लाइक द इंटरनेट इज़ हॉरिबल। अगर आप गाँवों में जाओ यहाँ पे तो यू विल रियलाइज़ दैट मोस्ट ऑफ द पीपल वुड से कि लाइक पिछले 2-3 साल में इंटरनेट आया है वहाँ पे एंड जियो है अभी बेसिकली जस्ट वहाँ पे, एयरटेल अभी काम भी नहीं करता है। So yeah, that's pretty much the condition. And even when I was in Yuksum, which is like the historical capital of Sikkim, the internet there was like horrible. And it's supposed to be a tourist place.
So yeah, that was pretty interesting. And even in Meghalaya, the place where you have these root bridges and all, Nongriat uska naam hai. Even there, the internet was horrible. तो बात कर लेते हैं कि why you should solo travel. So the first thing I want to say is that solo travel would really make you mature. You would learn to take responsibility for your own existence, and that's literally the definition of being mature. Okay, that's the first thing. The second thing is that you would come out really confident, because you would start believing that yes, you can take care of yourself now and you don't need other people, you don't need friends or anything. You are good on your own. A lot of people have this fear of being alone. एंड अगर आप सोलो ट्रैवल करोगे फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ अ टाइम, लाइक जैसे मैंने करा, 1 महीना 1.5 महीना एटलीस्ट अगर आप कर लोगे, तो यू वुड बेसिकली ओवरकम दिस फियर दैट लाइक अगर आप अपने दोस्तों से बात नहीं करो और अगर उन्होंने छोड़ दिया तो आपको क्या होगा, लाइक आप अकेले पड़ जाओगे. That fear you would literally overcome it if you solo travel. That's the thing I want to say to you. One more thing I wanted to add of the reason you should solo travel is because it's so fucking rare. I mean, it's so fucking rare to find people in their teenage who are solo traveling with their own money. So that is the reason I believe that you should probably make it a goal that you need to solo travel while you are in your teenagers. So now let's talk about like how can you solo travel, पैसा कहाँ से आएगा. So the obvious thing is that you need to earn money. That's not something that you can take from your parents or something, because अगर आप parents से मांगने जाओगे, so if you're young, you're 17 or something, they would obviously deny that. So the only way you can really travel is with your own money. Thank you, everyone.